दूसरे को जोड़ने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। यह नया पुल अब एक जीवन रेखा के रूप में काम करेगा, जिससे आवश्यक आपूर्ति, चिकित्सा सहायता, आपातकालीन सेवाएं बिना किसी रुकावट के सामान्य आदमी तक पहुंच सकेंगी। कनेक्टिविटी बहाल होने से विकास भी आगे बढ़ता है। यह भी याद दिलाता है कि जब भी राष्ट्र को जरूरत होती है, भारतीय सेना हमेशा देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। I would like to congratulate our engineers for making this bridge and reconnecting half of the Ramban district with the mainland. And secondly, I would like to thank each and every individual who's participated and helped them making it possible, starting from the district administration of Ramban, district police of Ramban, BRO, the National Highway Authority, and every person who's contributed towards making it possible. You know, making a bridge is not difficult. Making it against all odds is difficult. You would see that this bridge was technically non-viable. The weather was bad. The national highway was blocked. There was no way we could ferry stores. But collectively, in spite of all that, what they've been able to make, I would say it's an engineering marvel, not just a bridge. And this shows our collective and continued commitment towards the Awam of J&K. Secondly, I would like to also thank the Lieutenant Governor for acknowledging our efforts and personally inaugurating this bridge, and which means a lot to us. And this effort is not just in isolation, gentlemen. You know, from the day the rains and floods they have hit the state of Jammu and Kashmir, the soldiers of White Knight Corps have been out, saving lives, reaching out to people in any ways, any time, the way it was required, when it was required. It could be in the form of making bridges, like we constructed a bridge at Jasoti, Bhadarwa. It could be in the form of extricating people from an area where they were stranded. It could be lifting people, elderly, needy, sick, with the help of Indian Air Force, taking them out from there, conducting medical camps, conducting veterinary camps, or just sending people on Rahat and Khairiyat patrol. Because you will all understand that it is not just important to help people. It is more important to give them assurance and make them believe that हम आपके साथ हैं. हर समय, हर मौके, in every kind of situation, we are there. Because we believe that we merely don't build bridges across the roads, we build bridges across hearts. And that is what defines us as an organization and as a nation. हमारी इस रोड को बाकी रोड के साथ साथ इसको इतना बड़ा नुकसान हुआ कि जिसको ठीक करने में हमें बहुत सारा समय दरकार था। उस वक़्त हमने इंडियन आर्मी को अप्रोच किया। इंडियन आर्मी ने बग़ैर कुछ सोचे समझे इमीडिएटली हमारी सपोर्ट के लिए आगे आए और इन्होंने आके ये बेली ब्रिज बनाने का काम शुरू किया। आल्दो हमें मटेरियल पहुंचाने में कुछ दिन लगे हाईवे की वजह से, बट इन्होंने दिन रात मेहनत करके तो ये ब्रिज बना के दे दिया। इस ब्रिज से तकरीबन आधा रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस ब्रिज के बगैर हमारे पास जो एक दूसरा झूला ब्रिज था वो उससे हमें एसेंशियल सप्लाईज़ जो है वो इस बहुत सारे इलाके में करने में दिक्कत आ रही थी। तो इस मौके पर मैं इंडियन आर्मी का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और रामबन की आवाम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने दिन रात मेहनत करके तो ये ब्रिज हमें तैयार करके दिया और आज हमारे तकरीबन आधा जो हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी पॉपुलेशन को इस ब्रिज से फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।